Hello and welcome back to this channel. Dear students, this topic is translational and motional EMF, that is electromotive force. We'll start the topic with Faraday's law. The statement is electromotive force around a closed path is equal to the negative rate of change of magnetic flux enclosed by that path. हम लोग एक क्लोज्ड पाथ कंसिडर करें. दिस इज द क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड पाथ. इसमें एक गैप है. दिस गैप इज निग्लिजिबल, दैट मीन्स इट इज वेरी स्मॉल गैप. तो गैप के अक्रॉस विल बी गेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज EMF. E bar is electric field intensity, B bar is magnetic flux density. We know that electric and magnetic quantities are mutually perpendicular to each other. तो अगर मैं E bar ऐसे horizontal loop consider कर रहा हूँ तो B bar will be in vertical direction, that means it will be perpendicular. The mathematical equation of Faraday's law is EMF, electromotive force, is negative d by dt, means negative rate of change of flux phi. This magnetic flux is denoted by notation phi. Now, in terms of E bar, EMF is same as voltage because it is electromotive force. In another language, it is similar to the voltage. So, in terms of E bar, it can be written as closed loop integration of E bar dot dl bar. Let us say this mathematical equation is equation number 1. So, this is equation number 2. This is the value of EMF in terms of electric field. Now, the magnetic flux phi can be expressed as closed surface integration of B bar dot ds bar. B bar is magnetic flux density, S is the surface area, phi is the magnetic flux. अब ये एग्जाम में अगर नहीं रिकॉल हो रहा है तो कैसे याद रखना है? B bar is magnetic flux density which can be written as total flux. I will first write the definition. Flux density is total flux upon surface area. In terms of notation, total flux is phi, total surface area is S. अगर small flux है, so it is d phi, corresponding small surface area is ds bar. Therefore, d phi can be written as, ये यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, and it is vector, so I am taking dot product. So d phi is B bar dot ds bar. हम लोगों को phi चाहिए तो d मतलब डेरिवेटिव कैंसिल करना है. So let us take integration and this is related to surface. So it is closed surface integration of B bar dot ds bar. That's what I have written. Say equation number 3. This is the relation of magnetic flux with magnetic flux density. Now put equation 3 in equation 1. मतलब ये जो flux phi का वैल्यू है इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करना है. Therefore, equation of EMF can be written as minus d by dt closed surface integration of B bar dot ds bar. ये डेरिवेटिव साइन है. If I want to transfer it inside the integration, then it becomes dabba by dabba t. Therefore, next expression can be written as EMF is minus closed surface integration dabba by dabba t B bar dot ds bar. Say equation number 4. अब देखो, equation 2 is also equation of EMF, equation number 4 is also equation of EMF. So I can well equate these two equations. तो अगर दो equations equate करेंगे, so we'll get closed loop integration of E bar dot dl bar is equals to minus closed surface integration of dabba B bar by dabba t dot ds bar. अब ये एक एक्सप्रेशन हो गया which I have derived by using Faraday's law. Now related to this, we'll discuss the concept of translational and motional EMF by considering different conditions. अब देखो इस डायग्राम से रिलेटेड कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं. एक कंडीशन ये हो सकता है कि दिस लूप इज स्टेशनरी, मीन्स इट इज नॉट वेरिंग एंड B bar is changing with respect to time. सेकंड कंडीशन ये होगा कि B bar is stationary, loop is rotating. थर्ड कंडीशन बोथ B bar and this loop are changing. तो पहला कंडीशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, लूप इज स्टेशनरी मींस दिस लूप इज नॉट रोटेटिंग.
and B bar, that is magnetic flux density, is changing, varying with respect to time. अब देखो अपने पास ये इक्वेशन है. In this case B bar is changing with respect to time. That means we have to consider this part only, that is RHS part. So equation of EMF for this case can be written as minus closed surface integration of dabba B bar by dabba T dot ds bar. Why I have chosen this equation? क्योंकि कंडीशन क्या है, लूप स्टेशनरी लेकिन B bar वेरी हो रहा है. So this is the part which indicates variation of B bar with respect to time. इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल EMF और it is also called transformer induction equation, because in case of transformer voltage is induced from primary winding to the secondary winding. So this is the equation of EMF. This equation is also called as Maxwell's equation, derived from Faraday's law. Now consider second condition. Loop is moving and B bar is stationary. B bar is not changing with respect to time. The basic equation of force is, force in terms of B bar is Q in the bracket V bar. V is velocity, rotational velocity of this loop, cross, this is cross multiplication, cross B bar. B bar is magnetic flux density. Now we have the basic equation of electric field intensity, that is defined as force upon charge. So this is equation of force. If you divide this equation by charge Q, then this Q and Q gets cancelled. Therefore E bar can be written as V bar cross B bar. Now look at the condition. Loop is moving and B bar is stationary. That means as far as EMF is concerned, I will have to consider LHS side of this Faraday's equation. So EMF can be written as closed loop integration of E bar dot DL bar. Now put the value of E bar. Therefore EMF is equals to closed loop integration of V bar cross B bar dot DL bar. So this is the equation of EMF for condition 2. ये equation हम लोगों ने we have considered this equation by considering that loop is changing, loop is moving and B bar is stationary. So this is called motional EMF. This is the equation of motional EMF. Now let us consider the third condition. Loop is moving and B bar is changing or varying with time. मतलब फर्स्ट दो कंडीशंस हम लोगों को कंसिडर करने हैं, मतलब दोनों कंडीशन कंबाइन करने हैं. इन द फर्स्ट कंडीशन वी हैव डिस्कस दैट दिस वाज द इक्वेशन, RHS साइड वाज द इक्वेशन ऑफ EMF. इन द सेकंड कंडीशन वी गॉट दिस इक्वेशन एज द इक्वेशन ऑफ EMF. सो फॉर द थर्ड कंडीशन, when both the things are happening, loop is moving with velocity V bar and B bar is also changing with respect to time, then in that case EMF will be addition of these two parts, that is closed loop integration of V bar cross B bar dot DL bar minus, actually addition करना है लेकिन यह माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे है, so minus closed surface integration of D bar dot dabba by dabba T of B bar dot ds bar. So this is the equation of EMF for condition number 3. Now let us solve few numericals related to this part. Consider a problem. A circular loop conductor having radius 0.15 meter. मतलब ये radius का value दिया है. Let us denote it by small r, which is 0.15 meter. It is placed in XY plane. XY plane is also called Z is equals to 0 plane. The loop has a resistance of 20 ohm. Let us denote resistance by capital R, which is 20 ohm. If B bar is magnetic flux density, is 0.5 sin 10 raised to 3t Az bar. This is direction of B bar. Find the current flowing through this loop. अब कैसे सोचना है? Basic equation of current is V upon R, voltage upon resistance. Voltage is same as EMF. मतलब in this case I can write this as EMF upon R. इसका मतलब है हम लोगों को EMF कैलकुलेट करना पड़ेगा. We need to calculate the value of EMF. We have considered different cases, rather 3 cases. उसमें से कौन सा केस सिलेक्ट करना है? देखो कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि लूप इज इन मोशन और लूप इज मूविंग विद सम वेलोसिटी. सिर्फ B बार का इक्वेशन दिया है.
दिस इक्वेशन कंटेन्स साइन 10⁻³ इसका मतलब है जैसे टाइम चेंज होगा accordingly value of b bar will change, so we have to consider the equation which contains variation of b bar with respect to time, and that formula is emf is equals to minus closed surface integration of dabba by dabba t b bar dot ds bar. Now for the simplicity same equation ये dabba by dabba t बाहर लेते हैं, so I can write it as minus d by dt, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो d by dt आएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ b bar dot ds bar. अब मेक द थिंग सिंपल, ऐसे सोच लो, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट द मेक द थिंग सिंपल. व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे तो डायरेक्शंस कैंसल हो जाते हैं, मतलब सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये मैं ऐसा लिखता हूं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ b इंटू डी एस. ये कंसेप्ट याद रख लो, कभी भी डॉट प्रोडक्ट ले रहे तो देखो ये डायरेक्शन b बार का az बार है, ds बार का भी डायरेक्शन az बार होगा क्योंकि xy प्लेन मेंशन किया है. सो यू विल बी गेटिंग आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल बी गेटिंग az बार डॉट az बार मींस इट इज 1. इसका मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगा. नाउ दिस सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस d बाई dt ऑफ b integration of ds. Integration of ds is s, I mean I will write it over here. Integration of ds is s. S is the surface area. Now read the question carefully. It is a circular loop having some radius that is of 0.15 meter. So surface area for circular loop is pi r square. Value of r is 0.15, so it is pi into 0.15 square. So this is the value of s. So same equation I can write it like this, minus d by dt value of b. देखो यहाँ पे सिर्फ b है, मतलब डायरेक्शन नहीं लेना है, ये b बार का इक्वेशन है. So value of b will be 0.5 sin 10⁻³ az बार मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है. दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर ओनली magnitude of b bar, that is b, and we just now discussed surface integration of ds is s, whose value is pi into 0.15 square. So I will write it into pi into 0.1515 square. So keep this minus dabba by dabba t as it is. Let us simplify this bracket term. Keep sin 10⁻³ as it is. So you will get this answer as 0.01125 pi. I am also keeping pi as it is as well as sin 10³ as it is. सिर्फ मैंने देखो ये पार्ट 0.5 फिर ये 0.15 स्क्वायर इतना सिंप्लीफाई किया है. pi and sin 10³ is kept as it is. So this is the equation of EMF. Let us further simplify it. अब देखो इसके आगे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है. डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, sin 10³ का डेरिवेटिव, मतलब ये इस सिर्फ इसका डेरिवेटिव sin 10³ का, इसका डेरिवेटिव आएगा 10⁻³ cos 10³ सो पुट द वैल्यूज, आई मीन इसका डेरिवेटिव लेने के बाद ये आंसर आएगा. टेक द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टर्म विथ दिस टर्म. सो आंसर ऑफ ईएमएफ विल बी minus 11.25 pi cos 10⁻³ आप लोग you can well accommodate the value of pi, but it is fine. This is equation of EMF, that is voltage. Now last step, current I is V or EMF upon R. So this value minus 11.25 pi cos 10⁻³ upon value of R. R is 20 ohm. Therefore, final equation of current is minus 1.767 cos 10⁻³ देखो ये कैलकुलेशन कैसे किया है, सिर्फ इतना पार्ट सिंप्लीफाई किया है, बाकी cos 10⁻³ as it is रखा है. So this is the answer of current. Since it is current, unit is amperes. So this is the final answer of the given numerical. Next numerical, a conductor is placed along y-axis as shown in figure. This is the given diagram. एक conductor दिखा है which is along y-axis from y is equals to 0 to y is equals to 0.05 meters.
it moves with velocity v bar, that means it is moving with some velocity v bar, that is 5 cos 10 raised to 3t az bar. If b bar is 0.06 ax bar, then find induced voltage in the conductor. अब देखो b bar fixed है, whereas it is clearly mentioned in the given numerical that the conductor is moving with some velocity. तो हम लोगों को EMF का वो वाला इक्वेशन यूज करना है जिसमें बी बार कांस्टेंट है एंड द कंडक्टर इज रोटेटिंग विथ सम वेलोसिटी. सो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वी बार क्रॉस बी बार डॉट डी एल बार. सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ ईएमएफ वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड. अब पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं, मतलब वी विल फर्स्ट कैलकुलेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी बार एंड बी बार. पुट द वैल्यूज. V bar is 5 cos 10 raised to 3t az bar. ये V bar का वैल्यू है क्रॉस B bar. This is the given equation of B bar 0.06 ax bar. We know the rule. Cross product हो या dot product हो, the in this case it is cross product. We have to perform cross product of unit vectors. बाकी जो मैग्नीट्यूड से उसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब ये ऐसे करना है 5 इंटू 0.06 दैट इज 0.3. ये कॉस टर्म एज इट इज रहेगा cos 10 raised to 3t एंड इनसाइड द ब्रैकेट आई विल राइट az बार क्रॉस ax बार. बहुत सिंपल ट्रिक है. ये क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ डायरेक्शंस का लेना है, मैग्नीट्यूड का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन. सो 5 इंटू 0.06 कॉस्ट टर्म एज इट इज रखना है. नाउ लेट अस थिंक अबाउट दिस क्रॉस प्रोडक्ट. वी हैव लर्न द रूल अर्लियर, लेट अस ब्रश अप द कंसेप्ट. क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक सर्कल ड्रॉ करना है. यहां पे मैं लिखता हूं ax बार, दिस इज ay बार, दिस इज az बार. रूल इज if you are taking cross product of any two unit vectors, answer is third vector. If you are moving in the direction of arrow, answer is positive. If you are moving in opposite direction to that of arrow, answer is negative. अब हम लोगों को क्या चाहिए, az बार क्रॉस ax बार, मतलब ये वाला चाहिए az बार क्रॉस ax बार. So we are moving in the same direction as that of given arrow. So answer is, this answer is third vector, that is ay bar, and I am considering द पॉजिटिव साइन क्योंकि डायरेक्शन मोशन का az बार क्रॉस ax बार मतलब इट इज सेम एज दैट ऑफ दिस ओरिजिनल डायरेक्शन. सो v बार क्रॉस b बार, दिस आंसर कैन बी रिटन एज, यहां पे लिखता हूं मैं v बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू 0.3 cos 10 raised to 3t ay बार. So we have to put this value in this integration. यहाँ पे dot dl bar. अब dl bar is length. You are taking a dot product. एक वेक्टर का डायरेक्शन अपने पास है ay bar. So direction of dl bar must be ay bar. This is one logic. Second logic, look at this diagram. Conductor is along y axis. So dl bar, that is length of conductor, should be along y direction. So in Cartesian coordinate system, dl bar along y direction, मतलब variation of y is dy, direction is ay bar. This is equation of dl bar. So let us put these values in the formula of EMF. So EMF will be closed surface integration. V bar cross B bar, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है. So it is 0.3 cos 10 raised to 10 cube t ay bar डॉट, ये एक टर्म हो गया, dot dl bar dy ay bar. Just now we discussed the rule. Dot product या cross product है. We have to, in this case we are taking dot product. We have to just consider the dot product of unit vectors. That means ay bar dot ay bar. So ay bar dot ay bar यहाँ पे लिखता हूँ मैं ay bar dot ay bar is equals to 1. So simply this equation can be written as this is not surface integration, it is closed loop integration. Closed loop integration of 0.3 cos 10 raised to 3t dy. अब देखो ये इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये पूरे टर्म्स बाहर ले सकते हैं हम लोग. 0.3 cos 10 raised to 3t इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे dy. y के वेरिएशंस
they are these variations are given in the question 0 से लेके 0.05 तक. So 0 to 0.05. So simplify this. इसका आंसर आएगा y, अपर लिमिट आएगा 0.05. So simple 0.3 into 0.05. कैलसी में भी सॉल्व कर सकते हो. So final answer will be 0.15 cos 10 raised to 3t. This is the answer of EMF. And since it is electromotive force same as voltage, its unit is volt. So this is the final answer. अब देखो ये तो हमने दो अलग अलग केस कंसिडर किए. अगर प्रॉब्लम में दोनों केस मेंशन है, मतलब दोनों कंडीशंस मेंशन है, मतलब लूप इज आल्सो वेरिंग विथ मूविंग विथ सम वेलोसिटी एज वेल एज बी बार इज आल्सो चेंजिंग, तो थर्ड वाला जो डेरिवेशन में कंडीशन लिया था वो फॉर्मूला यूज करना है. रिमेनिंग प्रोसीजर विल बी एज इट इज. The next part is concept of scalar and vector magnetic potential. इसके लिए दो वेक्टर आइडेंटिटीज लगने वाले हम लोगों को. बिफोर दैट जस्ट रिकॉल द थिंग्स व्हाट वी हैव स्टडीड इन अर्लियर यूनिट्स. If you are taking dot product of any vector with vector operator del, it is called divergence. If you are taking cross product of del with any vector, it is called curl. If you are taking multiplication, normal multiplication of del with any scalar, it is called gradient. तो दो वेक्टर आइडेंटिटीज लिखे मैंने, del cross del v. V is the scalar potential. So cross means curl. So curl of del v मतलब gradient of potential is 0. Second, del dot मतलब divergence of del cross मतलब curl. So divergence of curl of a bar is any vector, is equals to 0. So these are two vector identities. Now we have learned one formula in electrostatics, that electric field is negative of gradient of potential. This is the equation from unit number 1. Electric field is minus del v. Say it is equation number 1. अब ये E bar का इक्वेशन है, del V is a gradient. So similar to this, for magnetic field I can write H bar is minus del V m. ये सफिक्स m सिर्फ इसलिए यूज किया है कि इट इज द टर्म आई मीन पोटेंशियल रिलेटेड टू मैग्नेटिक. देखो इलेक्ट्रिक के केस में सिर्फ स्केलर पोटेंशियल होता है. इन केस ऑफ मैग्नेटिक वी हैव टू कंसीडर स्केलर एज वेल एज वेक्टर पोटेंशियल. तो स्केलर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय Vm, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखता हूँ इफ J bar इक्वल्स टू 0. ये कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई दिस कंडीशन इज रिटन. नाउ वी हैव द इक्वेशन ऑफ कर्ल, रादर it is called it is from unit number 2, that is called point form of Ampere circuital law, which is J bar, that is current density, is del cross H bar. J bar is current density which is del cross H bar. This is point form of Ampere circuital law. So it is del cross H bar. This is the equation of curl. Now this is del cross H bar means it is curl of H bar. Let us put the values. So ये H bar का वैल्यू है माइनस डेल Vm, माइनस साइन बाहर लेता हूं मैं, डेल क्रॉस डेल Vm. तो ये आइडेंटिटी क्या आ गया, डेल क्रॉस मतलब कर्ल ऑफ, डेल Vm मतलब ग्रेडियंट. सो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर, that is curl of gradient of any scalar is 0. So this is equals to 0. That's why J bar is equals to 0. This condition is mentioned in equation 2. Now one important identity, the divergence of magnetic flux density is always 0. हम लोगों ने magnetostatics में learn किया है. So divergence of B bar, that is magnetic flux density is 0. Look at the second identity, del dot मतलब divergence of कर्ल ऑफ एनी वेक्टर इज 0. यहां पे सिर्फ इक्वेशन है डेल डॉट बी बार इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब है ये डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस, इसका मतलब है बी बार शुड बी कर्ल ऑफ सम वेक्टर. सो लेट अस राइट द इक्वेशन बी बार इज डेल क्रॉस ए बार. आई एम यूजिंग दिस आइडेंटिटी नंबर 2. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज B bar is equals to del cross A bar. That means B bar magnetic flux density is curl of A bar, where A bar is called vector magnetic potential. So this is the equation of B bar. We know that B bar is mu H bar, so it can be written as mu H bar is del cross A bar. Therefore H bar is equals to del cross A bar, and I will write here 1 by mu. This mu is transferred at the RHS. So say this is equation number 2. Take
del cross of both sides for equation number 3. So I will write del cross h bar is equals to 1 by mu constant del cross a bar. But del cross h bar is j bar. Just now we discussed del cross h bar is j bar. This is point form of Ampere circuit law. So I can write j bar is equals to 1 by mu del cross a bar. That means current density is curl of vector magnetic potential. So this is the concept of scalar and vector magnetic potential. So dear students, that's it for today's session. So thanks a lot for watching this video.